Hi, friends. Very, very warm welcome to all of you to today's session. And today we're going to take you through the second chapter of average. So, if you remember, at the end of the first chapter of average, I took you through a particular question, and I asked you to solve it using the methodology that we used to solve average. So today we'll be solving that question, and also we'll be solving some other questions so that the concept that we discussed in the last session it gets totally clear. The time, let's dig deep into this particular concept. Let's get started. So I'll be sharing with all of you the screen, so please pay attention. So here we go. So friends, as I have already told you that the way to solve these particular questions is you first attempt the question, and after that, while you're watching this video, pause the video, you watch this particular question, try and solve it, and then then you can have a look at the solution. That is the way you can help yourself better, right? So we'll get started with the very first question that was asked. Now, if you've seen the very first question, we talked about scenario wherein there were three different qualities of mangoes. So there were qualities of mangoes at rupees 61 per kg, 61 per kg, right? 61 per kg. And how many of those qualities were bought? If you see the total number of qualities that were bought were 55, right? So if I multiply these two, I should get the total amount of money that was spent on these particular mangoes. And then let's say if I try and add it, because I'm trying to figure out what is the total expenses that has been made. Only after I have made after I've calculated the total expenses, I can go ahead and I can calculate what is the average price, and on that average price, I'll try and make up 10% profit over here, right? So if you see, in the second part, it has been told that he bought 72 kgs. So 72 kgs were bought at rupees 50, correct? And it was also said that plus, if you see, the total number of the third quality was 67. So 67 multiplied by 48 was the third quantity, and the price of each was 67. So if I get the summation of this, which we did not calculate in the last, I should get the total amount of money that was spent. Now, for how much quantity of mangoes it was spent? 61 kg plus 72 kg plus 67 kg. Right. So when I multiply this, if you see 61 multiplied by, if you see double five, 61 multiplied by double five, what I do is I land up over here with a number that is 3355 plus. Similarly, when I multiply 72 over here, right? जब मैं 72 को multiply कर रहा हूं, so what do I land up over here? Multiply the last part, which is 67 multiplied by 48. What do I land up over here? I land up over here with the amount that is 3216. And then I have to divide all these numbers, है with the summation of these three numbers, which is equal to 200. Now, if you see over here, what is the sum of all these numbers? If I add these numbers, that is 3355, 3600, and 3216. If I add all these numbers, I should land up with the number that is 10171. And then I have to divide this number by 200. Right? So that I get the average price. Now, this particular number, that is 10171, and I divide it by 200. First, let me divide by 2. So the denominator becomes 100, and over here I'll get 5, and I'll get a 0, I'll get an 8, I'll get a 5.5. So because the denominator is 100, I can just shift this decimal two places. So I should land up with this number that is 50.855. Now, this is the average price, right? Now, on this average price, I need a 10% profit, a 10% profit. Now, what is a 10% profit, right? So, अगर इसको हम लोग round up भी कर देते हैं, इसको round up करके we can say that this number is okay. चलो, this is 50.86, right? तो इसको अगर हम लोग round up कर देते हैं, तो in that case, 10% of 50.86 should be equal to 5.086, correct? So I'll have to do this addition over here. So this becomes 6, and over here this becomes 4, and this becomes 9 point. Over here I have 55. So the answer to this question is, अगर इसको भी round up कर दिया जाएगा, this amounts to 55.95. So 55.95 is the total price, is the price per kg that I need to sell so that I make a profit of 10%. I hope I made myself clear over here, right?
ना आप देखो देखो यहाँ पर सो मेनी मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन इज इन्वॉल्व यहाँ पर, टू गेट दिस पर्टिकुलर नंबर इन फ्रैक्शन आई हैव टू डू सो मेनी कैलकुलेशंस ओवर हियर, एंड these calculations could take time provided if you are not provided with a calculator in your competitive exams. Right now, how exactly can I solve this question? By the methodology that we discussed in the last session. So let's figure it out that how this question can be solved much easier. Now अगर आप देखोगे इन दिस, इफ यू रिमेंबर हम लोग कैसे करके अज्यूम एवरेज लिए थे, अज्यूम एवरेज लेके कैसे करके हम ईच वैल्यू कैलकुलेट किए थे, विल डू समथिंग सिमिलर ओवर हियर। यहाँ पर हमारे पास तीन अलग अलग क्वालिटी है, एक में है द प्राइसेस, सॉरी एक में क्वांटिटी 61 और दूसरा क्वांटिटी 72 एंड तीसरा क्वांटिटी इज 67। और इनका प्राइस क्या है, लेट्स फिगर आउट। द प्राइस दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर इज 55, इसका प्राइस दिया गया है 50 और इसका जो प्राइस दिया गया है दैट इज इक्वल टू 48। नाउ दिस टाइम माय फ्रेंड व्हाट आई विल डू इज आई विल नॉट कैलकुलेट द टोटल कितना प्राइस हुआ है, आई विल जस्ट ट्राई एंड अज्यूम एन एवरेज, एंड बिकॉज ये बीच का नंबर है दैट इज इट इज बिटवीन 55 एंड 48, सो आई विल अज्यूम माय अज्यूम्ड एवरेज, नॉट द एग्जैक्ट एवरेज। मैं अज्यूम कर रहा हूं एवरेज आसपास तो 50 का होना चाहिए। आप 49 भी पकड़ सकते हो, लेकिन अगर आप 50 पकड़ोगे तो इन दैट केस यू विल बी सेव्ड फ्रॉम वन कैलकुलेशन, बिकॉज आपने एक तो सही पकड़ा है। तो अगर आप देखोगे मैंने अज्यूम किया है 50, तो अगर आप इन इन इस नंबर को देखोगे तो ऑब्वियसली आपने 5 कम पकड़ा है, तो आपको आपका मिस्टेक इज +5, आपको आपका जो भी आंसर है उसमें +5 करना पड़ेगा, राइट। फॉर हाउ मेनी क्वांटिटीज हैव यू डन दिस मिस्टेक? यू हैव डन दिस मिस्टेक फॉर 61 केजी। हर एक केजी के लिए आपने 5 5 5 5 5 5 कम पकड़ा है, तो आपको 5 5 5 5 ज्यादा ऐड करना चाहिए टू योर आंसर, राइट, विच मीन्स दिस इज टोटल अमाउंट इज 305 का आपने एक मिस्टेक किया, 305 का आपने एक मिस्टेक किया है। नाउ यहां पर 50 है, आपने पकड़ा भी 50 है, तो यहां पर द मिस्टेक इज जीरो, नो मिस्टेक्स, बिकॉज ऑल द 72 केजीज वर परचेज एट 50 रुपीज पर केजी। यहां पर प्राइस पर केजी इज 48, तो आपने दो यहां पर ज्यादा पकड़ा है, तो आपको करना क्या है, यू हैव टू डू -2 पर केजी, आपको -2 करना पड़ेगा। फॉर हाउ मेनी केजीज यू हैव टू डू दिस? यू हैव टू डू दिस फॉर 67 केजीज, सो दिस शुड लैंड अप विथ -134। तो देखो, जहां पर हमें इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा था, अभी और कैलकुलेशन कितना छोटा हो गया। सो नाउ अगर आप देखोगे व्हाट इज द नेट मिस्टेक आई एम डूइंग, द नेट मिस्टेक आई एम डूइंग अ पॉजिटिव मिस्टेक, बिकॉज ये बड़ा है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आई गेट 7, आई शुड गेट एज 171 एज द आंसर। सो 171 पॉजिटिव मिस्टेक मैंने किया है, टोटल मिस्टेक मैंने किया है, जितना भी मैंगोस थे उसमें मैंने 171 का मिस्टेक किया है। अब अगर आप पर केजी का मिस्टेक कैलकुलेट करना चाहते हो, सो आई डू इट 171 डिवाइडेड बाय 200 इज द मिस्टेक दैट आई हैव डन पर केजी। मैंने पर केजी को 50 पकड़ा था, तो मैं मिस्टेक कितना किया हूं, 171 डिवाइडेड बाय 200, विच शुड लैंड अप टू बी इक्वल टू 0.855। सो मैंने पकड़ा था 50 और मेरा मिस्टेक इज दिस मच, सो 50 प्लस दिस बिकम्स 50.855 इज द एवरेज प्राइस पर केजी। एंड फिर से द सेम वे जैसे हम लोग इसको कैलकुलेट किए थे, सो 50.86 को हम लोग इसको अज्यूम कर, वी कैन राउंड इट अप एंड देन वी कैन से दैट इट इज 5.086, and then we can simply add it up and say this is 6, this is 4, this is 9 point, this is 5, and this is 5. This is basically the price of the mangoes that will have a 10% profit when you sell all these mangoes at this particular price. So यहाँ पर भी वही आंसर निकला था, यहाँ पर भी वही आंसर निकला है। आप देख लो आपको कौन सा पर्टिकुलर मेथड ज्यादा इजी लग रहा है। ऑफ कोर्स द फर्स्ट मेथड इज समथिंग दैट वी हैव डन इट इन स्कूल, हमें वी आर मोर कंफर्टेबल विद दोस मेथड। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो नया मेथड है, इसको अगर आप स्टार्ट करो सॉल्व करने के लिए, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको 15-20 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट, बिकॉज आपका नंबर ऑफ कैलकुलेशन, जो अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन वो बहुत कम हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो मैं जानबूझ के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स लिया हूं जो कि इजीली सॉल्व ना हो, ताकि आप देख सको कि क्वेश्चन को आप, इवन इफ द कैलकुलेशन हैज लॉट ऑफ अनकंफर्टेबल नंबर्स, आप फिर भी उन पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, now have a look at the second question. Pause this video and try and solve this particular question, and then come back and watch the solution. Now, what's this question? The question says that Ravi and 6 of his friends plan to go to picnic. As a contribution for the expenses to be incurred, his friends paid rupees 1000 each. सबने हजार रुपया दिया, बट एट द एंड रवि एंडेड अप पेइंग रुपीज 300 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल। तो रवि को 300 रुपया ज्यादा देना पड़ा देन द एवरेज। फाइंड द टोटल मनी कंट्रीब्यूटेड, टोटल मनी कितना कंट्रीब्यूट हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। नाउ वेरी कॉमन आंसर ओवर देयर वुड बी, सबने तो 6000, सबने हजार दिया है, एंड रवि एंड्स अप पेइंग 300 मोर, तो 1000 प्लस 300 दैट इज 1300 रुपया, एंड सबने दिया है हजार दैट इज 6000, तो 7300। और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। नाउ दिस वाज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अ बैंक पीओ एग्जाम, और मैक्सिमम 85% ऑफ द स्टूडेंट्स दे मार्क्ड 7300 एंड दे केम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, एंड विच वाज द रॉन्ग ऑप्शन, ये गलत ऑप्शन था। इससे पता चलता है कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज पे काम नहीं किया है। तो अगर मैं इसको प्लेन सिंपल एवरेज के कॉन्सेप्ट्स में काम करूं, नो शॉर्टकट्स, तो हम कैसे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब, आप जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो इसी को अगर हम लोग फॉलो करेंगे ना, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द सेवन, हमें पता नहीं, यू कांट से 1000। 1000 तो उनके 6 दोस्तों ने पे किया था। अगर 1000 ही एवरेज होता तो रवि को भी तो 1000 ही देना पड़ता ना। एवरीवन शुड हैव पेड 1000। किसी को ज्यादा क्यों देना पड़ा? किसी को ज्यादा इसलिए देना पड़ा बिकॉज बाकी लोगों ने कम दिया है। करेक्ट। सो इसका मतलब ये हुआ दैट एवरेज इज समथिंग आई डोंट नो, तो मैंने एवरेज को ले लेता हूं, एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज द टोटल सम कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो 6 लोगों ने कितना पैसा दिया? हर एक ने हजार 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 दिया। तो 6 लोगों ने 6 into 1000 दिया, प्लस हाउ मच डिड रवि पे? देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रवि एंडेड अप पेइंग 300 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल। सबका जितना एवरेज निकला दैट इज एक्स। एक्स वॉज दैट, सबका एवरेज निकला था एक्स, प्लस 300 रवि को देना पड़ा। एवरेज अगर एक्स है तो रवि पेड एक्स प्लस 300, राइट। अच्छा, ये जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, हमें इसको डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने लोग हैं टोटल? 7 रवि को मिला के, 6 दोस्त और रवि, राइट। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सो आई शुड गेट 7x शुड बी इक्वल टू 6000 प्लस एक्स प्लस 300, राइट। तो यहां से मुझे पता चल गया दैट 6x का वैल्यू हो जाता है 6300। सो एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है? 1050। तो व्हाट इज द टोटल मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड? टोटल मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड इज एक्स मल्टीप्लाइड बाय 7। एवरेज निकला है 1050, इसका मतलब टोटल मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड, टोटल जो क्वेश्चन में पूछा है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? दैट इज 1050 मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट इज इक्वल टू 7350 इज माई आंसर। दिस इज द आंसर। ओके, राइट। अब अभी लेट्स फिगर आउट इसी क्वेश्चन को हम बिना ये सारे सॉल्व किए कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट, राइट। देखिए रवि के पास कितने दोस्त थे? 6 दोस्त थे, 1 2 3 4 5 6। ये सब रवि के दोस्त हैं। सबने कितने पैसे दिए? हजार 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 दिए, है ना। सबने हजार 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 दिए, करेक्ट। और रवि कितना दिया? हाउ मच डिड रवि पे? रवि ने, देखिए रवि ने जो एवरेज है दैट इज एक्स, हम लोग जो लास्ट टाइम पकड़े थे उतना तो दिया। उसके अलावा रवि ने 300 रुपया ज्यादा दिया। एक्स तो दिया, उसके साथ 300 रुपया ज्यादा दिया। ही हैड टू पे 300 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल। आप सोचो ये 300 रुपया उसने ज्यादा क्यों दिया? वो 300 रुपया ज्यादा इसलिए दिया बिकॉज बाकियों ने एवरेज नहीं दिया। बाकियों ने एवरेज से कम दिया, उसको मेकअप करने के लिए उसको 300 ज्यादा देना पड़ा, एवरेज और 300 देना पड़ा। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। तो इसका मतलब रवि को 300 जो देना पड़ा एक्स्ट्रा, इट्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अमाउंट ऑफ मनी दैट ईच वन पेड। तो रवि को 300 ज्यादा देना पड़ा 6 लोगों के लिए मेकअप करने के लिए। तो कैन आई से रवि ने हर एक के लिए 50 रुपया का मैनेज किया। 300 डिवाइडेड बाई 6 इज 50। सबके लिए रवि ने 50 50 50 एक्स्ट्रा डाला, इसलिए उसको 300 रुपया ज्यादा डालना पड़ा। उसके दोस्तों ने कितना डाला था? 1000 डाला था। रवि ने उनके लिए कितना डाला? 50 डाला। इसका मतलब द एवरेज इज 1050। सिंपल, राइट। मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट इज 7350 इज द टोटल मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड। आई होप दिस इज क्लियर। सो एवरेज के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप बिना कोई ज्यादा कोई मेहनत किए भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज आर क्लियर। सो इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ एवरेज आई वांट टू टेक यू थ्रू सम न्यूअर कॉन्सेप्ट, और ये सारे जो कॉन्सेप्ट है इनके ऊपर भी हम थोड़ा और काम करेंगे। और ज्यादा अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाए तो यही मेथड यूज करके उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। आई होप दीस सेशंस आर हेल्पिंग यू। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर channel, and as well as if you really want personal attention, then be a part of our WhatsApp group, and through that we will take you to the masterclass that we have over there. We can give you personal attention. My name is Neil, and I'm the facilitator. I have 25 years of experience when it comes to quantitative aptitude and all different exams that you can write. I have trained more than a lakh of students. So I'm here to help you out. If you want to watch the YouTube videos and learn, fantastic. If you want to be a part of a masterclass, fantastic. However, just one thing that I want to share, that the goal that I have, my friend, is that, you know it if you watch my previous videos, that quantitative aptitude should not be the reason why you get rejected in any of the competitive exams. Thank you very much for watching this video. Take care, and I'll see you in the next video.